we are going to understand the approach or the strategy that we're going to use in order to crack a para summary. सबसे पहले para summary CAT के according कितना ज़्यादा important है? You can definitely expect a minimum of 2 to 3 questions on para summary in the VA section. 2 to 3 questions on para jumbles, 2 to 3 questions on odd one outs, and maybe a few questions on para completion. आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, शायद आपको ऑड वन आउट की जगह पे पैरा कंप्लीशन आ जाए, पैरा कंप्लीशन की जगह पे ऑड वन आउट आ जाए. बट वन थिंग आई एम श्योर ऑफ इज यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट आस्क्ड पैरा समरी, बिकॉज पैरा समरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द होल VA section, even important than para jumbles, right? There are 3 points that something which you need to remember. First point is it must not include any extra or irrelevant information. Next is it must not distort the information, यानी कि information जो correct है उसको correct तरीके से ही present करनी है, ना कि उसको गलत way में present करना है. And third thing is it must not leave out on any critical information. Right? These 3 points are extremely important. जब भी कोई para summary choose कर रहे हो, pick कर रहे हो, attempt कर रहे हो, ये 3 points mind में रखना, you will definitely get a correct answer. Fine. So what is a para summary? आप लोगों को I think थोड़ा बहुत पता ही है. Yes, Bharat. Yes, Sakshi. Correct. Thank you so much all of you for replying. So para summary क्या होती है? Paragraph की summary. Now, what is this summary all about? ये summary होता क्या है? See, a paragraph will be kept in front of you. आपको 4 से 5 लाइन का पैराग्राफ दिया जाएगा, मैक्सिमम 6 to 7 लाइंस, उससे ज्यादा लंबा पैराग्राफ नहीं होगा. So paragraph of an average of 4 to 5 lines will be kept in front of you. And then you'll be asked to choose a particular option as an answer which best summarizes the paragraph kept in front of you. Right? So आपको एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो पैराग्राफ को बेस्ट वे में समराइज कर रहा है. अब ये समराइज करना क्या होता है? सी, अगर आपके सामने 4 से 5 लाइन का पैराग्राफ है, देन ऑब्वियस सी बात है उसमें कोई ना कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स रहे होंगे. Because when we try to crack a reading comprehension or when we try to read an article, not every single word is correct. I mean, not every single word is important, right? हम क्या करते हैं, हम उसको superficially पढ़ के या फिर ऊपर ऊपर से पढ़ के we try to understand or grab the main idea, right? So similarly, what we have to do is we have to read the paragraph, we have to understand the paragraph, and then we have to try to grab the main idea of that particular paragraph. Main idea यानी क्या होता है? उस पैराग्राफ का प्राइमरी पर्पस, यानी जो ऑथर कोई भी आर्टिकल या कोई भी पैसेज आपके सामने रख रहा है, वो हमेशा उस आर्टिकल के जरिए आपको कोई ना कोई मैसेज देना चाहता है, राइट? सो देयर इज ऑलवेज अ मैसेज through which the author keeps a particular passage on an article in front of you, and you just have to find out that message. तो आपको एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो क्या करेगा, मेन आइडिया लिखेगा उस पर्टिकुलर ऑप्शन में. So, see, there are a lot of elements while choosing a correct para summary, and I'm going to discuss all those tips, tricks, and strategies. But this is going to be really tricky. So, have patience, right? Stay calm, and we're going to understand the whole process. उसके बाद हम questions पे जाएंगे, right? Okay, Abhishek. Just I'll just get back to you on this, right? ठीक है. So let's start now. We are going to understand the approach or the strategy that we're going to use in order to crack a para summary. सबसे पहले para summary CAT के according कितना ज़्यादा important है? You can definitely expect a minimum of 2 to 3 questions on para summary in the VA section. आई होप आप सबको पता है कि VARC हम क्यों बुलाते हैं इसे. VA is verbal ability and RC is reading comprehension. Verbal ability के section में there are a lot of questions. I would say there are a lot of types of questions being asked to you. One of them is para summary. Right, so you can typically expect 2 to 3 questions on para summary, 2 to 3 questions on para jumbles, 2 to 3 questions on odd one outs, and maybe a few questions on para completion. आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, शायद आपको ऑड वन आउट की जगह पे पैरा कंप्लीशन आ जाए, पैरा कंप्लीशन की जगह पे ऑड वन आउट आ जाए. बट वन थिंग आई एम श्योर ऑफ इज यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट आस्क्ड पैरा समरी, बिकॉज पैरा समरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द होल VA section, even important than para jumbles, right? And I would say easier than para jumbles. Para summary काफी easy है. अगर आप correct approach use करोगे, then definitely you'll be able to crack all the questions with 100% accuracy. So now, just quickly, let's start understanding the approach. सबसे पहले आपको क्या करना है? You have to read the paragraph carefully. You must try to understand the paragraph. This is extremely important, right?
Yes, absolutely, Raghav. It is. It is very, very important to understand the paragraph. Why? Because अगर आप किसी चीज की समरी को चूज कर रहे हो तो समरी में आप क्या देखते हो? समरी में आप उस पैसेज के मेन की एलिमेंट्स देखते हो या की वर्ड्स देखते हो, राइट? यू ट्राई टू सर्च फॉर द की वर्ड्स इन दैट पर्टिकुलर समरी और इन दैट पर्टिकुलर ऑप्शन. Now imagine if you have not even understood the passage. Let's say if a paragraph is kept in front of you and if you don't even understand 70 to 80% of that paragraph, then will you be able to pick a correct parasummary? Obviously not, right? Because a correct parasummary will always be based on the correct understanding of the paragraph. So if you've not been able to understand the paragraph, then my suggestion to you will always be to ignore or to skip that particular question and move on to the next one. राइट? अगर आपको लगता है दैट आपको मिनिमम 50-60% पैसेज समझ आया है तो आगे बढ़ के उसे अटेम्प्ट करो, अदरवाइज जस्ट स्किप इट एंड मूव ऑन, बिकॉज इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड द पैराग्राफ देन देयर आर हाई चांसेस दैट यू वोंट बी एबल टू चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द पैरासमरी. क्लियर? can you just write down the full form, Ishika? उसके बाद क्या बोले? If you've not, yeah. So then after that, after understanding the paragraph, what do you have to do? You have to pick the subject matter of the passage. Extremely important. Can you all see the slide that I'm trying to show you? Because मुझे comments में लिखा हुआ आ रहा है कि slide नहीं दिख रही है. Can you all see the slide? Okay, fine. PPT font size. I'm so sorry, Ramya, if that is the case. But I think मैंने जितना हो सकता था font increased रखा है. But I'm so sorry. Yes, Anushka, this is the first slide, so don't worry. Yeah. So आपको सबसे पहले क्या करना है? You have to understand the paragraph, and after understanding the paragraph, you have to go to the subject matter of the passage. Subject matter समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Why so? Because whatever option you'll be choosing as a para summary, it will purely be based on the subject matter of the passage. अगर आप आपकी पैरा समरी में सब्जेक्ट मैटर का के बिना लिखा हुआ ऑप्शन अगर चूज करोगे, then 110% is going to be wrong, right? So after understanding the paragraph, you have to try and find out the subject matter of the passage. What is the subject matter? Something that the passage is based upon, right? Passage किस बारे में बात कर रहा है, उसका मेन आइडिया क्या है, उसका प्राइमरी पर्पस क्या है, या फिर उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है. उसके बाद आपने पैराग्राफ को समझ लिया, you also found out the subject matter, you found out the main idea, then you have to go to the options. अब काफी ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी चीजें, because options are going to be very much similar in a para summary. Now, how do you need to deal with them? There are three things that you need to remember, three most important points that you need to remember in order to crack a para summary. So the first point is that the right option must not have anything apart from what is given to you in the passage, which means आप कोई भी option as a para summary अगर choose कर रहे हो, then it must not have any extra information apart from what is given to you in the passage. Passage में जितनी information है, अगर उससे कुछ भी extra irrelevant आपको दिखाई देता है option में, then immediately eliminate it at the very first glance. Fine. Next thing is the right option must not distort information, right? Information distort यानी basically आप let's say paragraph में लिखा है the author is from India, and अगर option में उसको तोड़ मरोड़ के गलत वे में present किया है, तो फिर आप क्या करोगे? उसको eliminate कर दोगे, because you cannot digest wrong details in a correct para summary. एक correct para summary में कभी गलत detail या distorted detail नहीं हो सकती, right? So this is the next thing, second thing that you need to make sure. और तीसरी last चीज ये है that the right option must not leave out on any critical information. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आउट ऑफ ऑल द 3 पॉइंट्स गिवन टू यू. और अगर ये चीज आपने मिस कर दी, देन अगेन यू माइट एंड अप चूजिंग द रॉन्ग ऑप्शन एज एन आंसर. तो लास्ट ऑप्शन, तीसरी चीज क्या है? दैट यू मस्ट नॉट लीव आउट ऑन एनी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन. अगर आपको पैराग्राफ पढ़ के keywords पता लग गए, if you've been able to find out the main idea or the keywords from a particular paragraph, then you have to make sure that the correct para summary or the correct option that you're choosing as an answer must have most of those keywords that are chosen by you.
राइट तो पैराग्राफ पढ़ो, उससे पता लगा लो कि इसमें क्या क्या कीवर्ड्स है, क्या मेन आइडिया है, सब्जेक्ट मैटर से क्या क्या चीजें रिलेटेड है, और फिर उन्हीं चीजों को पर्टिकुलरली आपके ऑप्शन में ढूंढो. If you're able to find all those details, all the important details of your paragraph in a particular option, then clearly just choose it as the correct answer. Because correct para summary में सबसे ज्यादा important क्या है ढूंढना? The most important details of the passage. Right? That's how a correct para summary is formed. अगर वो पैराग्राफ की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स इंक्लूड नहीं कर रही है, या फिर एक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल लीव आउट कर दी है, उसने डिलीट कर दी है, एलिमिनेट कर दी है, then that particular option just cannot be your correct answer. So I hope this is clear to all of you. There are 3 points that which something which you need to remember. First point is it must not include any extra or irrelevant information. Next is it मस्ट नॉट डिस्टॉर्ट द इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन जो करेक्ट है उसको करेक्ट तरीके से ही प्रेजेंट करनी है, ना कि उसको गलत वे में प्रेजेंट करना है. एंड थर्ड थिंग इज इट मस्ट नॉट लीव आउट ऑन एनी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन. राइट, दीज 3 पॉइंट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. जब भी कोई पैरा समरी चूज कर रहे हो, पिक कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, ये 3 पॉइंट्स माइंड में रखना. यू विल डेफिनेटली गेट अ करेक्ट आंसर. राइट, Anushka, I did not get your question. I did not get your doubt. Can there be an example in the right option? What do you mean by example? I hope you're not. What kind of example are you talking about, Anushka? I clearly do not understand your doubt. Oh no, examples. अच्छा, paragraph में कोई example है तो वो option में हो सकता है या नहीं? That's what you're asking. So examples most. I clearly did not understand your question. Okay. उसके बाद हमें क्या करना है? सी, वंस यू हैव रेड द पैराग्राफ, अंडरस्टूड द पैराग्राफ, उसके बाद सब्जेक्ट मैटर चूज करो. सब्जेक्ट मैटर चूज करने के बाद ये 3 पॉइंट्स डेफिनेटली आपको वेरीफाई करना है. इफ दीज 3 पॉइंट्स आर गेटिंग वेरीफाइड, देन इमीडिएटली चूज द करेक्ट ऑप्शन एज एन आंसर. यू डू नॉट हैव एनी अदर चॉइस. उसके बाद यू मस्ट लुक फॉर द डिफरेंस बिटवीन द ऑप्शंस. अब अगर आप ये 3 पॉइंट्स लेट्स से वेरीफाई कर रहे हो, ऑब्वियसली ऐसे 2 से 3 ऑप्शंस होंगे जो इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो नहीं करेंगे, एंड यू विल बी एलिमिनेटिंग दोज ऑप्शंस. जैसे ही आपको पता लगता है कि एक पर्टिकुलर ऑप्शन इन तीनों पॉइंट्स में से एक चीज को फॉलो नहीं कर रहा है, देन जस्ट एलिमिनेट इट. Just the way you try to eliminate the wrong options in a reading comprehension, you have to follow the same process here as well. ठीक है, सो एलिमिनेट करते जाओ गलत ऑप्शंस को, ऐसे ऑप्शंस जो इन तीनों चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं. एंड इन द एंड इफ यू आर लेफ्ट विथ लेट्स से 2 सिमिलर ऑप्शंस, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आप उनमें डिफरेंसेस देखोगे. यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर द डिफरेंसेस बिटवीन द ऑप्शंस. And what is the point of difference? The point of difference should be evaluated. You should see if the passage has any hint that helps you understand which option is better and which is not. तो अगर आपके पास 2 ऑप्शंस है A and B, let's say if you are confused between 2 similar options, आप क्या करोगे? इन दोनों को बहुत अच्छे से इवैल्यूएट करोगे एंड यू आर गोइंग टू ट्राई टू फाइंड द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन दीज 2 ऑप्शंस. अब आप बोलोगे कैसे, कौन से डिफरेंसेस हम लोग देखें? सी, डिफरेंस क्या देखना है? अगर आपको ऐसा लगता है that 2 options are very much close to each other, then you should mark the one that maintains the focus. It is very, very important to choose an option that always maintains the focus of the passage. जैसे कि मैंने आपको बोला, keyword, main idea. What is the focus of the passage? The main idea. Right? The essence is more important than the less valuable information. 2 options might be equally true, but one will talk about the essence while the other will focus on the insignificant details. Right? अगर आपके पास 2 options है, ठीक है, if you are left with 2 options in the end, it is very much possible कि वो दोनों options paragraph के according correct हो. It is very much possible, it is 110% possible कि ये जो information है जो इन दोनों options में है, वो इंफॉर्मेशन दोनों ही ऑप्शंस में एब्सोल्युटली करेक्ट हो अकॉर्डिंग टू द पैसेज. बट व्हाट डू यू हैव टू डू? यू हैव टू चूज एन ऑप्शन जो कि ऐसी इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर रहा है जो पैसेज का फोकस मेंटेन करे, पैसेज का एसेंस मेंटेन करे. Right? So in the end, you don't have to focus on the less important or the less valuable information. You have to choose an option that focuses on the subject matter or the main idea of the paragraph. So now let's understand a few tips and tricks for para summary. The very first thing that we need to understand is that we have to take advantage of theta based question.
राइट? अगर आपको पैरासमरी टीटा फॉर्म में आती है, देयर आर चांसेस कि शायद आ जाए, अगर आती है देन यू हैव टू मेक श्योर कि आप क्या करोगे, यू हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ इट एंड यू डोंट हैव टू स्किप इट. दूसरी चीज, अंडरस्टैंड और इग्नोर. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस दैट इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द पैराग्राफ, अगर आपको पैराग्राफ की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, और इफ यू फील दैट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पैसेज इज जस्ट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू जस्ट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया, then it just happily skip it and ignore it and try to move on, right? तीसरी चीज, there is no perfect answer. बहुत सारे स्टूडेंट्स का पैरा समरी में करेक्ट आंसर नहीं आ पाता है because they always go and they always try to search for a perfect answer, but there is no perfect answer in a para summary. ऐसा आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा जो एब्सोल्युटली परफेक्ट हो, या फिर it's just not possible to have every single word of the paragraph in that particular option which you are expecting it to be there, right? तो आपको कोई ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो सारे के सारे ऑप्शंस में एक बेस्ट पॉसिबल आंसर हो. You cannot get a perfect answer, that's why just go for the best possible answer. Main idea matters. This is again very very important. Main idea बहुत ज्यादा मैटर करता है. Ramya, there are no chances, but this was just an idea that I kept forward in front of you just to make you guys happy. Otherwise, ऐसा होगा नहीं. So main idea matters. Main idea किस तरह से matter करेगा? See, let's say if you're looking for an option, if you have two options in the end, right? अगर आपके पास दो similar options है और दोनों ही, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बोला, if both of them are correct according to the passage, then in the end you have to choose an option जो कि main idea पे focus कर रहा है, यानी कि वो पर्टिकुलर मैसेज पे फोकस कर रहा है जो ऑथर आपको उस पैराग्राफ के जरिए देना चाह रहा है. एंड लास्टली, ऑलवेज एंड ऑलवेज गो विद द एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. जितने ऑप्शंस आपके सामने हैं उनमें से डायरेक्ट करेक्ट आंसर पिक करने का चूज मत करना, ट्राई मत करना, बिकॉज अगर आप डायरेक्ट पिक करने का ट्राई करोगे देन यू माइट एंड अप मेकिंग ब्लंडर्स. So don't do that. Always go with the elimination strategy, especially in the para summaries. It's very important because काफी ज्यादा similar options होते हैं. Right? So please make sure that you're always following this elimination strategy. Okay, any questions, any doubts till now? Can we just move on and try to solve the most important questions? Yes? Can the option have an example which is not stated in the paragraph? Okay, Anushka, yes, it can have an example that's not stated in the paragraph, लेकिन आपको ऐसा ऑप्शन यूजुअली लास्ट में रखना है, प्रायोरिटी में, राइट? बिकॉज अगर ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई एग्जाम्पल है जो पैराग्राफ में नहीं दिया है लेकिन उससे रिलेट कर रहा है, तो वो करेक्ट तो होगा, करेक्ट हो सकता है, लेकिन वो एक करेक्ट पैरासमरी होने की चांसेस उसके बहुत कम है. बिकॉज इफ अ पैरासमरी इज हैविंग एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो शायद वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को मिस आउट कर रही है. बिकॉज पैरासमरी इज हार्डली ऑफ 1 or 2 लाइन्स. अगर वो 1-2 लाइन में भी बाहर की कोई इन्फॉर्मेशन रखती है as in form of examples, then obviously it will be missing out on some important information. So करेक्ट हो सकता है, लेकिन वो लास्ट प्रायोरिटी रखना. इट माइट नॉट बी द करेक्ट पैरासमरी. ओके, नॉट ऑलवेज, आई वुड से अनुष्का, जैसे मैंने अभी भी बोला, यू हैव टू चूज द बेस्ट पॉसिबल आंसर. तो अगर आपको कोई दूसरा ऑप्शन करेक्ट नहीं दिख रहा है, देन दैट पर्टिकुलर ऑप्शन कैन बी द आंसर. आई एम जस्ट सेइंग, जस्ट कीप इट एज द लास्ट प्रायोरिटी. ओके, ठीक है. Now let's start. Yes, definitely. Let's start with the first question. Now you guys are going to read the paragraph very very carefully. Paragraph को read करो, subject matter ढूंढो, go to the options, search for those 3 points. अगर वो 3 points को कोई भी option follow नहीं कर रहा है, then immediately eliminate it and then try to choose the correct option in the end, the one which maintains the focus of the essence of the passage. So the first question is right in front of you. ये जितने भी questions हैं, 99% of the questions will be from CAT past papers. So please make sure बहुत ज्यादा concentrate करो आप. Come on, your time starts now. Start reading the paragraph, go through all the options, and then come up with the correct answer in the end. Let's now try to concentrate. Now, what is this paragraph talking about? ये paragraph किस बारे में बात कर रहा है? Let's just try to understand. North American walnut moth caterpillar. So it's the whole paragraph is about a caterpillar and how it tries to save itself from the predators. Right? North American moth caterpillars look like easy meals for birds, but they have a trick up their sleeves. And what is their trick? They produce whistles that sound like bird alarm calls, scaring potential predators away.
At first, scientists suspected birds were simply startled. What do you understand by the word startled? Startled का मतलब क्या होता है? Yes, anyone? What is exactly scared, right? Shocked, surprised, scared, shocked, कुछ भी बोल सकते हो. So पैराग्राफ में क्या लिखा है कि जो नॉर्थ अमेरिकन मॉथ कैटरपिलर्स है, ये बहुत ही इजी मील्स होते हैं बर्ड्स के लिए, तो इन्हें खुद को सेव करना पड़ता है. नाउ व्हाट डू दे नीड टू डू इन ऑर्डर टू सेव देमसेल्व्स? Right, they produce a trick, right? And what trick do they produce? They try to produce whistles that sound like bird alarm calls, scaring the potential predators away. At first, scientists ko kya laga? That these birds were just startled or shocked by the noise. But a new study suggests a more sophisticated mechanism. The caterpillar's whistle appears to mimic a bird alarm call. तो पहले साइंटिस्ट को लगा कि जस्ट कोइंसिडेंस होगा और जस्ट एक ऐसे ही लाउड न्यूज प्रोड्यूस करते होंगे कैटरपिलर्स जिनको सुन के बर्ड्स डर जाते होंगे. बट देन दे केम अप विद अ न्यू स्टडी जिसने ये बोला कि ये जो आवाज है वो एक्चुअली में बर्ड के अलार्म कॉल को कॉपी करती है, मिमिक करती है. एंड दैट्स व्हाई बर्ड्स गॉट स्केयर्ड बाय दिस नॉइज, राइट? When pecked by a bird, when bitten by a bird, the caterpillars whistle by compressing their bodies like an accordion. Accordion, I hope you guys know, it's an instrument जो कि इस तरह से पहले अंदर जाता है, उसके बाद फिर से बाहर आता है. So एक process बताइए that how do these birds whistle? When bitten by a bird, these caterpillars whistle by compressing their bodies like an accordion and forcing air out through specialized holes in their sides. The whistles are impressively loud. They've been measured at over 50 decibels from 5 centimeters away from the caterpillar, considering they're made by a 2-inch long insect. So पूरे पैराग्राफ में आपको सिर्फ एक स्ट्रैटेजी बताई है that these caterpillars use in order to save themselves from the predators. Right? अब आपको क्या करना है? सब्जेक्ट मैटर पता चल गया. नाउ यू नीड टू मेक श्योर कि आप एक ऐसा ऑप्शन चूज करो जो सारे के सारे की एलिमेंट्स को इंक्लूड कर रहा हो. व्हाट अबाउट द फर्स्ट ऑप्शन? Why is the first option getting eliminated? Because यहाँ पे क्या लिखा है? These caterpillars will whistle periodically to ward off the predator birds. They have a specialized vocal tract that helps them whistle. Exactly. Periodically ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है. वो कितने टाइम पे ये whistle produce करते हैं, periodically करते हैं या फिर नहीं करते, that is not at all being talked about. Hence, extra information. इसको eliminate कर दो. Second option, North American walnut caterpillars can whistle very loudly. The loudness of their whistles is shocking as they are very small insects. Now, though this is true, this is absolutely true according to the passage, but it is missing on the key element of the passage. Idea kya hai? What is the main idea? Why are these whistles being produced? Whistle produce क्यों करते हैं? To save themselves from the predators, right? तो वही point यहाँ पे miss out हो गया है. It obviously says that they whistle very loudly, but why do they whistle? That's not at all being talked about in the B option. That's why it goes out as well. Option C क्या बोल रहा है? The North American caterpillars, in case of acoustic deception, produce whistles that mimic bird alarm calls to defend themselves. Every single point is getting covered in the C option. वो क्यों whistle करते हैं? In order to defend themselves, in order to protect themselves. वो किस तरह से विसल करते हैं? इट इज थ्रू द acoustic deception. Acoustic deception यानी किसी चीज किसी को धोखा देना, किसी को चीट करना, किसी को डिसीव करना. So how are they deceiving the birds? By creating a whistle, by making noise, and that's why acoustic नाम दिया. Acoustic यानी वो वॉइस से रिलेटेड होता है, नॉइज से रिलेटेड होता है. सो एवरी सिंगल थिंग इज बीइंग प्रोड्यूस्ड हियर इन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, दैट दीज कैटरपिलर्स create whistles, and in a case of acoustic the deception, they produce whistles by doing what? By mimicking the bird alarm calls. And why do they do this? They do this to protect themselves, to defend themselves, right? So this is definitely going to be the correct answer. Now इसके और D के बीच में बहुत कम डिफरेंस है. In fact, there are just two differences, और वो दो differences, एक तो acoustic word D option में नहीं है, which is bad, और दूसरा camouflage word is being added here. Now, camouflage is definitely not something that's given to you in the passage. Camouflage यानी क्या होता है? Anyone? ये एक ऐसी टेक्निक है जो एनिमल्स या क्रीचर्स अपना खुद का फिजिकल फीचर
यूज करके खुद को हाइड करने का ट्राई करते हैं, एग्जैक्टली टू ब्लेंड इन द सराउंडिंग, राइट? सो यू माइट हैव हर्ड अबाउट दीज सी क्रीचर्स जो अपना जो कलर है वो चेंज कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं ताकि लोग जो प्रेडेटर्स है उन्हें देख ना पाए। या फिर यू माइट आल्सो हैव हर्ड अबाउट द कैमेलियन, राइट? कैमेलियन अपनी आईज का कलर चेंज करते हैं। Exactly. So yes, all of you are correct. Either they change their skin color or they change their appearance or they change their texture. उसको camouflage बोलते हैं, right? But there is no such thing given to you in the passage. ये camouflage technique में involved नहीं है. ये सिर्फ क्या कर रहे हैं? Whistle produce कर रहे हैं. That's it. So for that reason, we will eliminate D option as well because it again has some irrelevant extra information, something that's not given to you in the passage. Anushka, deception यानी किसी को cheat करना, किसी को deceive करना, and that's what they are doing, right? वो bird alarm calls की voice को mimic कर रहे हैं. Acoustic यानी something that's related to sound. Because they are producing whistles, we are naming it acoustic, right? Because वो voice create कर रहे हैं, वो sound create कर रहे हैं. Yes, Vijayana, true. So I hope everyone has got this. Jinka galat hua tha, I hope it is clear to all of you. Yes. Can I please have a yes in the chat box if you can move to the next question? Is this clear, guys? Okay, fine. Now I'll be showing you the next question. Come on, try this. See, paragraph kya bol raha hai? Artificial embryo twinning is a relatively low-tech way to make clones. As the name suggests, this technique mimics the natural process that creates identical twins. Right? ये जो artificial embryo twinning का process है, ये natural process को completely mimic करता है, copy करता है, right? And that's how it creates identical twins. In nature, twins form very early in development when the embryo splits into two. जैसे ही एक embryo two parts में divide होता है, तभी twins form होना start हो जाते हैं. Twinning happens in the first days after egg and sperm join. I think इसी वजह से बहुत सारे answers गलत मिले हैं, and most of you guys have ended up choosing D as an answer. But I'll definitely tell you why it's not the correct answer. ये जो egg and sperm की joining का process है उसे हम क्या बोलते हैं? Fertilization, right? And what are they saying? When does twinning happen? Twinning happens in the first days after the fertilization process, which means after the egg and sperm join. While the embryo is made up of just a small number of unspecialized cells, each half of the embryo continues dividing on its own, ultimately developing into separate complete individuals. जैसे जैसे ये धीरे धीरे complete individuals में form हो जाते हैं. Since they developed from the same fertilized egg, the resulting individuals are genetically identical. Obviously, अगर वो same egg से है, तो इसीलिए जब वो बड़े होते हैं तो काफी genetically identical लगते हैं. Now, D option क्या बोल रहा है? Artificial embryo twinning is low tech and is close to the natural development of twins, where the embryo splits into two identical twins. Now, why is this option wrong? Can anyone tell me why is this option wrong? ये option क्यों गलत है? See, if you notice the word close to the natural development, this is absolutely wrong. किसी चीज के close होना या किसी चीज को completely mimic करना, both of them are absolutely different. Paragraph क्या बोल रहा है? That artificial embryo twinning completely mimics the natural process. Mimic यानी copy करना. So when we say that it is close to the natural development, it seems wrong. It sounds wrong. अगर आपके पास इससे भी better option है, तो please उसे choose करो and not this. So for now, let us just try to keep it aside and eliminate it. C option क्या बोल रहा है? Artificial embryo twinning is just like the natural development. Fine. Seems correct. Where during fertilization twins are formed. हमें paragraph में clearly पढ़ लिया है that during fertilization twinning does not happen. When does twinning happen? It happens after the fertilization. This word after is to be kept in mind here. इसलिए ये भी eliminate हो गया. B option क्या बोल रहा है? Artificial embryo twinning is low tech, unlike the natural development. Completely opposite to the paragraph. So this goes out as well. And in the end, we are going to choose A option as the correct answer, which says artificial embryo twinning is low tech, correct, and mimetic of the natural development, correct, of genetically identical twins from the embryo after fertilization, exactly after fertilization. That's what we wanted.
Right, so I hope this is clear to all of you. D option इसलिए eliminate हुआ because there's a difference between mimicking something and being close to something. C इसलिए eliminate हुआ because it says during fertilization twinning happens, which is absolutely wrong according to the passage. Twinning happens after egg and sperm join, which means after the fertilization process. I hope this is clear to all of you. Can I please have a yes in the chat box if this is clear? A yes please from all of you जिनके गलत थे आंसर, especially वो लोग. Okay, fine. Let's go to the third question. Come on, try this. Now see, what is this paragraph talking about? Did you guys understand the paragraph? Paragraph में एक moral obligation के बारे में बात की है, and they're talking about the Samaritan law. Now, what is the Samaritan law? It is basically a law in Europe that says अगर कोई danger में है तो हमें उसे help करना चाहिए. Now, this is ideally an ethical thing that we all follow, but बहुत सारी countries में इसे एक law बना दिया गया है. Right, so what is this paragraph talking about? Should the moral obligation to rescue and aid persons in grave peril yani someone who is in danger, felt by a few, be enforced by a criminal law? So the paragraph itself is starting with a question. Keep this in mind. वो कुछ prove नहीं कर रहे, कुछ conclude नहीं है कर रहे paragraph में. They themselves are asking us a question that should this become a law? Should we follow the lead of a number of European countries and enact bad Samaritan laws? Proponents of bad Samaritan laws must overcome at least three different sorts of obstacles. First is they must show the laws are morally legitimate in principle. That is, that the duty to aid others is a proper candidate for legal enforcement. Second, they must show that this duty to aid can be defined in a way that can be fairly enforced by the courts. And third, they must show that the benefits of the laws are worth their problems, risks, and costs. Now see, you do not need to remember all these three proponents. आपको माइंड में क्या याद रखने की जरूरत है कि क्वेश्चन पैराग्राफ हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है that should we need to enact this Samaritan law, should we follow these European countries जो same law को follow कर रहे हैं, और अगर ये law बनता भी है then it is very important कि ये जो law है वो ये इन तीन proponents को follow करे, right? And these three proponents are given to us in the paragraph. तो आपको की एलिमेंट्स ऑलरेडी पता है. अगर आपको तीन कंडीशंस दी है, तीन प्रोपोनेंट्स दिए हैं पैराग्राफ में, then obviously these three proponents are very very important to be taken care of in a correct option. ठीक है, ए ऑप्शन में क्या बोला है? A number of European countries that have successfully enacted bad Samaritan laws may serve as model statutes. Now, though this is correct, why are we not choosing this as the correct answer? Why are we not choosing this as the correct answer? Because they are not talking about these three proponents, right? These three sorts of obstacles. ये तीन obstacles की बात कर ही नहीं रहा है. अगर because ये तीन obstacles काफी ज्यादा important है, right? If they are not given to us in the option, then there's no point in talking about it. ये जो पूरा का पूरा paragraph है, ये इन तीन considerations पे टिका हुआ है. So this is very important कि हम इन तीन obstacles को, इन तीन considerations को include करें option में. So this goes out. B option क्या बोल रहा है? Exactly, that's also not given, Ramya. Everyone agrees that people ought to aid others. The only debate is whether to have a law on it. Now, this is not covering a lot of important points. First of all, it's not covering three conditions or three obstacles. दूसरी चीज, ये Samaritan law को exactly बात ही नहीं, उसका जिक्र ही नहीं कर रहा है, right? The Samaritan law itself is not given to us in the option. So this goes out as well. Now, third और fourth option में काफी लोगों को confusion हुआ होगा, right? But there is a slight difference between these two options. See, C option क्या बोल रहा है? That if bad Samaritan laws are found to be legally sound, which means कि अगर ये तीनों obstacles को overcome कर देता है, if they are legally sound and enforceable, they must be enacted. अब passage में या paragraph में ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला है that if we are overcoming these three obstacles, then we must enact them. Are we talking about any kind of surety in the passage or any kind of necessity in the passage? No, not at all, right? हमारे पास option है follow करने का या ना करने का. Exactly. The passage itself is questioning. The passage itself is asking you just a question. It's not forcing you to do something. ये हमें खुद एक question पूछ रहा है कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए
और अगर ये होता है तो हमें ये 3 कंसिडरेशंस ध्यान में रखने की जरूरत है, ये 3 ऑब्स्टैकल्स ध्यान में रखने की जरूरत है, राइट? सो इट इज नॉट फोर्सिंग अस टू डू समथिंग एट ऑल, एंड दैट्स व्हाई दिस, बिकॉज ऑफ दिस मस्ट वर्ड, वी विल बी एलिमिनेटिंग दिस थर्ड ऑप्शन, एंड इन द एंड हम फोर्थ ऑप्शन चूज करेंगे, बैड समारिटन लॉज may be desirable. Now may is a possibility, not a necessity, right? Okay, guys, thank you so much then. It was really nice having you all. See you all next week. Bye-bye. Good night. Take care. I hope you enjoyed the session and I hope you learned things out of it. So bye-bye, guys. Good night. Take care. Bye. Thank you.